अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स चैप्टर, बहुत इजी है। हम इसको ज़रा देखेंगे। सबसे पहले इसके सब डिवीजन्स देख लेंगे। नर्वस सिस्टम की सब डिवीजन्स, देयर आर द टू सब डिवीजन्स। फर्स्ट वन इज CNS, the central nervous system, and PNS, peripheral nervous system. Central nervous system में जो organs आएंगे वो हैं brain and your spinal cord. Peripheral nervous system में nerves आ जाएंगी आपकी और ganglia आ जाएगा, ठीक है? Okay, and after that moving forward, अगर आप इस इमेज पे देखें तो this is your nervous system, basically central nervous system, and this one is peripheral nervous system. All the nerves, the cranial and the spinal nerves and the ganglia, these all are included in the peripheral nervous system, while uh, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आपका ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द फंक्शन of the nervous system is basically how it perform and how the process is taking place. Basically, is keep this thing clear that here is your PNS, and from PNS you are getting central system, and they are commanding the motor neurons. Okay, so अगर हम इसको पहले थोड़ा सा briefly देख लें कि what it is basically. So सबसे पहले जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई भी चेंज है बॉडी में, वो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज था, वो डिटेक्ट कौन करता है? वो करता है पीएनएस। पीएनएस का जो सेंसरी इनपुट है वो बेसिकली इस चेंज को डिटेक्ट करता है। अब ये इसको डिटेक्ट करके दो चीजें करता है, एक ये डिटेक्शन करेगा उसकी, और दूसरा ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फॉर इंस्टेंट वी आर टेकिंग एग्जांपल कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपका जो सेंसरी जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने डिटेक्ट किया एंड दे जस्ट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, द सिग्नल टू द central nervous system. Now within the central nervous system, what is happening? We know there are the interneurons, there is the analyzation of the signal, and after that central nervous system generate करेगा किसको? motor output को, motor with the help of motor neurons, और वो motor output आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे टूवर्ड्स what? towards your effectors. Effectors आपने बेटा हमेशा याद रखनी है। There are two types of effectors, muscles and glands. That's it. So glands are going to release the hormone, we know that. And muscles, okay, we were taking the example of temperature. अगर for instance if the temperature is too high in body, ठीक है, हमारी जो बॉडी थी उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, सेंसरी आउटपुट ये था जी कि उन्होंने इनपुट ये था कि उन्होंने डिटेक्ट किया the increase in body temperature. So what is happening? They just detect it and transmit the information to the central nervous system. Now central nervous system will analyze and they will generate the motor output, which will send the signal to the effectors to generate the response. So response आपका, अब जब temperature ज़्यादा है, we know what happen when the body temperature is high, the evaporation is taking place. So as a result glands क्या करेंगे? बॉडी से वाटर को evaporate कर देंगे और आपको क्या होगा? आपको कूल फील होगा। एंड इफ फॉर इंस्टेंट
the PNS is detecting कि body का temperature बहुत low है, they will detect it, send message to the signal to the central nervous system. Central nervous system will generate the motor output. Motor output will take the signal towards the effectors. Now at this point, the effectors will not be like okay the glands, so they will be the muscles. We know the shivering is happening. उस टाइम हम लोग थोड़ा सा कांपना शुरू कर देते हैं जब टेम्परेचर बॉडी का लो होता है. एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर आपका क्या होगा, हाई होगा. ठीक है, सो दीज पॉइंट शुड बी क्लियर. अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, हाउ इट इज हैपनिंग बेसिकली. सो यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्री फंक्शंस इन जनरल. फर्स्ट इज दे जस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन. आपकी जो भी इंफॉर्मेशन के जो भी सिग्नल आपका डिटेक्ट किया जाता है, it is by you can say okay, this is done by the receptors. okay, so ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कोई भी चेंज होगा इंटरनल और एक्सटर्नल एंड देन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द central nervous system. They are basically detecting as well as they are transmitting the signal to the central nervous system. अब जब वो process हो जाता है, we know in the central nervous system there are the interneurons which are going to help the communication between the uh, sensory and the motor neurons. This is done because of the interneurons which are present within the CNS. Get it? So the point is कि अब क्या होगा, आगे से आपका response आ जाएगा. They will give response and the CNS initiate the nerve impulse called motor output, and वो effectors, we know it will take information towards the effectors. Effectors हमेशा two types के होंगे, muscles and glands. Okay, next one is basically the functional organization of the nervous system. अब अगर हम diagram से थोड़ा सा देख. Okay, uh, next, yes. ओके यस, अगर आप इस डायग्राम में थोड़ा सा डीपली देखें तो दिस वन, दिस इज द सेंसरी नर्वस सिस्टम. ओके, एंड मोटर नर्वस सिस्टम. वी नो कि जी सेंसरी नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है, डिटेक्ट करता है और क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे से आपका क्या करेगा, जनरेट करेगा व्हाट, मोटर नर्वस सिस्टम को. ओके, अब आगे ना इनकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम को. अगर तो वो सेंसरी जो आपका है ना वो विद इन योर कंट्रोल, अब कॉन्शियसली है, सेंसरी इनपुट जो है वो इनवॉलंटरी नहीं है, वो वॉलंटरी है, then we call it somatic. and if it is like visceral sensory, like वो कुछ बहुत सारे बॉडी में सेंसरी इनपुट है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है. आपके हार्ट बीट, आप वट एवर लाइक ब्लड वेसल्स का जो भी है, इंटरनल ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, वो सारे आपके कंट्रोल में नहीं है. उनको हम कहते हैं विजुअल सेंसरी. सो देयर आर टू टाइप्स. आफ्टर दैट अगर हम डिवाइड करें इनपुट सेंसरी नर्वस सिस्टम, आउटपुट
मोटर नर्वस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो सोमैटिक मोटर और ऑटोनोमिक मोटर। सेंसरी सोमैटिक sensory will always generate somatic motor. It should be clear, okay? कि आपने जैसे अभी मैं जैसे लेक्चर दे रही हूँ, मैं जैसे आप बोल रही हूँ, this is all because basically we know this all is happening within nanoseconds. So ये सारा मेरे कंट्रोल में है. If I want to quiet, what will happen? I will just stop moving my tongue and keep my mouth shut, and as a result, what will happen? There will be no voice. Getting that? So this is the somatic sensory, and it is going to generate what? Somatic motor. Clear? And visual sensory, like आपका हार्ट बीट का जो भी फंक्शन है, आपका अगर हार्ट बीट है, what is happening, it is not in your control कि आप अपने हार्ट बीट को स्लो डाउन करें और या फास्ट करें. सो दिस इज इनवॉलेंटरी, और वो आपको क्या ये इनवॉलेंटरी सेंसरी इनपुट होता है, और इट विल ऑलवेज जनरेट ऑटोनोमिक मोटर. क्लियर? ओके. अब अगर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करें किसके, nervous system, okay? So it should be very clear that, okay, central nervous system, brain and spinal cord, brain and spinal cord, and peripheral nervous system is including um, receptor and nerves. So this is it. हमें इस चीज की क्लैरिटी होगी है अगर हम दोबारा से इसकी समरी को गो थ्रू कर ले तो. So it will be quite easy for you to know. Yes, this one. सो यहाँ से जो भी आपका सेंसरी इनपुट था वो गया आपके स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट हुई मोटर न्यूरॉन, एंड मोटर न्यूरॉन इज डूइंग व्हाट? इट इज गोइंग to give the response. I think it is clear. Okay. So um, if we see, this is it. So this is it, and we will discuss. This is it. We will discuss the cells of nervous tissue and the type of nervous, the types of neurons in the next video, inshallah. Okay. Thank you.